20 hectares of land, or you know, why do I need free electricity? Yeah. Why do I need If free I can electricity? buy a Mercedes-Benz cash down, why should I ask for free Or electricity? free water. Yeah. What they then do is they pass it, you know, they sell it to the poor. The rich are getting that subsidy, they're getting that free, and then they're selling it to the poor. You know what's happening in Punjab right now? The water is so bad that people have 6 foot, 7 foot ROs installed. Yeah. And the locals are actually buying it at 50 rupees a litre. Yes. That's the situation that's happening. The classic example, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो चैम्बर है, सुप्रीम कोर्ट में वकील कितना कमाते हैं सबको पता है. हाँ. उसमें भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है. काहे के लिए? I mean, why? So Supreme Court में भी 300 यूनिट बिजली free. हाँ. You think it's all right? Anybody wants to ask a question before I go to Aman? Huh? You're all in agreement? Yes. Huh? So I'll come to your thoughts in just a bit. But Aman ji, एक बात बताइए. Is when somebody says ahead of the elections, free laptops for girl children, that's under education. Is that a freebie or is that welfare then? और भाई laptop मिल रहा है तो क्यों ना ले? You see, there's a very fine difference between a freebie and a welfare. One is called a public good, the other is not a public good. When a state, whether it is a center or a state meaning any small, big country, anything, when a state decides it to be a public good, then it becomes a welfare activity. When it decides it is not a public good, then it becomes a freebie. That's a very fine difference, first of all. Secondly, there is no country in the world, there is no political party in the world which does not give so-called freebies or welfare benefits. If you look at Europe, they charge about 70% tax, 70 to 75% tax. If you go to Nordic Europe, you charge at about 80% tax. Education is free, healthcare is free, road is free, transportation till the age of 16 or 17 and then beyond 50 or 60 is free in most states. So now that's not freebie. It's a welfare which is being given because that is considered to be a public good. And you're being charged for it. You're already charged because you're paying 80% taxes. It's not free. Taxes. In a country like India, which was having about 98% tax at the time of independence. That means if you earn 10 rupees, 9 rupees you give to government of India, 1 rupee you keep for yourself. What did people do? No, I have earned only 1 rupee. So you take 9 paisa from me and leave me 1 paisa. Balance 9 will be my money which I am generating as black money. And that's why we have so much of black money generated over the last 75 years. Please understand that this government, from years to years, governments have reduced their tax. We are the lowest tax-paying country in the world today. One of the lowest, 10, 5, 10, 20, 30% tax, which is for personal income tax. Yeah. Even for companies, even after surcharge, it is one of the lowest bracket countries in the whole of Asia. So imagine when you've reduced so much of taxes, where do you get the money for giving as public goods? So one thing should be very clear, no one can define a product as a welfare or free, like some of my young minds have defined it today. It is clearly, if a state defines it as a public good, whether it's a question of water, whether it's a question of clothes, like when we started India, we said roti, kapda, makan. So the agenda was everyone must have roti, kapda, makan. Now if at that time Pandit Jawaharlal Nehru would have made it as a public good, then all these three things would have to be given free of cost by the states. Okay, state doesn't mean, again as I said, state here meaning technically country or a small state or a small town. Right. So now if in Tamil Nadu, giving grinders during election, cooking gas, pressure cookers, Mangalsutra, everything. That's pure bribe, no? Yeah. Sir, public good? नहीं, ये public good. घर में Again, घर में ग्राइंडर जा रहा है किसी के घर में कुकर प्रेशर कुकर में वो खाना ढंग से स्टीम्ड राइस बना सकते हैं. Public good, sir. No, please understand. As I said, it's legal term. If a state defines it as a public good, only then it is a public good. If it is not defined as a public good, then it is not a public good. So it has to be defined, properly defined in legal format. That is a public good. Then it becomes a welfare, whether it is Wi-Fi, whether it is water, healthcare, education, transportation, road, whatever it may be, doesn't make a difference. Clothes, it may be anything. It may be even cars, from that matter of fact. But if a state defines it as legally, a public good, you're saying legally, only then it is a welfare good. Otherwise, anything may be called as a welfare, it is a freebie. So let us say I'm giving water free to agriculturists. If it is not defined by the state as a public good,
then it is nothing else but a freebie. It may be defined as a welfare or not defined as a welfare. If I am giving 5,000 rupees for a child being born to a girl child being born, and as soon as the lady passes out, she is given 5,000 rupees, 10,000 rupees. Now, if it is not state defined, then it becomes a freebie. Now, people will call it welfare. It is not welfare. It is a freebie. And this should be very clearly understood. For that, allocations are automatically taken from taxpayers' money. Correct. And that's why it's a state. And that is accounted for. It is not that it is not accounted for. But then my question to you again, sir, फिर वोट कहां से मिलेंगे? देखिए कि जब तक फ्री का कुछ प्रॉमिस नहीं होगा, वोट कहां से आएगा? मैं आपको कह रहा हूं ना कि दिल्ली में सबसे पहला इंसाइट यही था, केजरीवाल फ्री वाईफाई देगा। उसके बाद अगले चुनाव में क्या आया? केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है। आपने क्यों वोट किया? फ्री बिजली दे रहा है। क्यों वोट किया? बिल माफ हो रहे हैं, 3 महीने का बिल माफ हो रहा है। तो हम भी तो मुफ्त खो रहे हैं। जनवरी में जब पंजाब का, यूपी का, 4-5 राज्यों का चुनाव शुरू हुआ तो कंपटीशन शुरू हुआ। हाँ। यूपी से शुरू हुआ। हाँ। एक ने बोला हम स्कूटी देंगे, एक ने बोला हम टैब देंगे, एक बार लैपटॉप देंगे, एक ने कहा हम कुछ और देंगे। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि यूपी के ऊपर तो 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 6.5 लाख करोड़ का कर्जा। फिर देखा पंजाब में भी बड़ा कंपटीशन हो रहा है। पंजाब में 3 लाख करोड़ का कर्जा, पंजाब की पॉपुलेशन 3 लाख, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा। राजस्थान 4.5 लाख करोड़ का कर्जा, तमिलनाडु जिसकी बात कर रहे हैं उसके ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा। तो मैंने कैलकुलेट किया तो 70 लाख करोड़ तो कर्जा है। मतलब कहने का यह हुआ मेरे पास 1,000 रुपए है और मैं अपने स्टेट का मतलब क्या, परिवार के मेंबर सिटीजन्स क्या है, अगर मैं मालिक हूं, मेरे पास 1,000 रुपए है तो मैं अपने परिवार को 100-100 रुपए बांटूं या मैंने सबको 1,000-1,000 रुपए दूं, बाकी मैं वर्ल्ड बैंक से उधार लेता रहूंगा, अमेरिका से लेता रहूंगा और बाकी जगह से लेता रहूंगा। आने वाले टाइम में लंका कोलैप्स क्यों हुआ? लोगों ने कर्ज देना बंद कर दिया। पाकिस्तान कोलैप्स क्यों हुआ? कर्ज देना बंद कर दिया। अमेरिका ने देना बंद कर दिया, जापान ने देना बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने देना बंद कर दिया। हमें कोई कब तक कर्ज देगा? मैं आनंद नरसिम्हन को तब तक कर्ज दूंगा जब तक मुझे लगता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आनंद नरसिम्हन मुझे वापस कर देंगे। जिस दिन मुझे लगे अरे इनका तो कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैं क्यों दूंगा कर्ज? और जब आपके ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा कर्ज हो गया और मैंने कर्ज देना बंद कर दिया, फिर उसके बाद आप खाना कहां से खाओगे, पानी कहां से पियोगे? बट सिचुएशन इज, अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल देता हूं। जहां आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, फिर आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। प्रायोरिटी क्या है? राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। लोग 30-30 साल कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख ले रहे हैं। हमारी सरकारों ने 20-25 हजार करोड़ खर्च करके पूरे देश का जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर दिया? आप प्राइवेट गार्ड लेके चलते हैं, आपकी सोसाइटी में प्राइवेट गार्ड होगा, क्यों? क्राइम सेफ करने के लिए। ये ड्यूटी सरकार की थी, स्टेट की ड्यूटी है कि आपको सिक्योरिटी दे, क्यों नहीं दे पाए? उनके पास पैसा ही नहीं है कि पुलिस की संख्या बढ़ा सके, उनके पास पैसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन बना सके। तो पुलिस रिफॉर्म करने का पैसा नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म करने का पैसा नहीं, आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का पैसा नहीं, आपके पास लेबर रिफॉर्म करने का पैसा नहीं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देने का पैसा नहीं, कुछ नहीं। पैसा देने का क्या है? कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब, मिक्सर जूसर ग्राइंडर, और ये देने का पैसा है। तो ये हरामखोरी है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की हरामखोरी है। 5 महीने 5 साल आराम से मौज करती हैं, चुनाव आता है एक ऑफर दे देती हैं फ्रीबीज का और सोचती हैं। अभिजीत मजूमदार, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन?